Hello students, how are you? Take care of your parents, yourself and your siblings during COVID-19. I am Vinay Kumar Singh, lecturer English at Sardar Patel Inter College Chergaon, district Jhansi. Students, in previous video I taught you about exceptions while changing direct speech into indirect narration. Direct narration into indirect narration. Let's start from the remaining parts. Let's see. Exceptions related to the change of tense. Let's see from C. Manjeet said to me, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Okay? Since the reported speech has a proverb, so will not change the tense of the reported speech. हालांकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है पास्ट का है, फिर भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे. देखिए, मंजीत टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी is the best policy. Let's see another example. Students, this reported speech has proverbs, so we did not change the tense of the reported speech. Next. Mohan said Samudragupta is called the Napoleon of India. Okay, let's change it. Since there is historical fact in reported speech, so will not change the tense of the reported speech, while the tense of the reporting verb is past one. Mohan said that Samudra Gupta is called the Napoleon of India. Okay, let's see. Students, here again we have not changed the tense of the reported speech. Let's see other type of examples where we do not change the tense of the reported speech while the tense of the reported speech is past one. Let's be rough it. Okay. Students, sometimes in the reported speech is in past tense and two actions go at the same time in reported speech. There is time clause, adverb clause of time. So we do not make in the change of the tense of the reported speech in such a situation. Let's see. Rajni said when
The show began. I started dancing. Let's see. Rajni said that when the show began, she started dancing. नियम ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टेड स्पीच में दो कार्य एक साथ हो रहे हों, उसमें पास्ट टेंस आए और टाइम क्लास हो, तो उसमें आने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस जो आया है इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की बनी रहे। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ओके, द कार ड्राइवर said when he was passing by Lal Chowk an unruly mob pelted with stones. ओके, देखिए, द कार ड्राइवर said that when he was passing by Lal Chowk an unruly mob pelted with stones. Okay, let's see another type of example. Okay, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है और ये टाइम क्लास भी है इसमें, इट शोज इनकम्प्लीट एक्शन। यहाँ ये इनकम्प्लीट एक्शन दिखा रहा है, इसीलिए हमने इसके टेंस में परिवर्तन नहीं किया है। सपोज इट shows complete action, then we'll change the tense of the reported speech. Okay, let's rough it. Students, sometimes there is unreal condition or imaginary condition in reported speech. Then we do not change the tense of the reported speech while changing it the direct speech into indirect narration. While there is past tense, or we can say the reporting verb is in past tense. Let's see. Ajay said, if I lived near
school, my school, I would not be late. Okay, let's change. Ajay said that if he lived near his school, he would not be late. We can see there's no change. Okay, let's see another example. तो ये जो काल्पनिक शर्त होती है तो उसमें जो है अनरियल पास्ट टेंस से शुरू होती है कभी, तो वो जो है उसमें आई सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए, हर्ष सेड टू मी इफ माई ऑफिस were near my house, I would not use my bike. Okay? Hers told me that if his office were near his house, he would not use his bike. Students, I think you will have become totally clear your concept about the exceptions while changing direct speech into indirect speech or indirect narration will be completely clear. Okay, let me rough it and we'll study. I'll teach you the rules for the change of the pronouns. Okay, let me rough it. Rules for the change of pronouns. स्टूडेंट्स, एक फार्मूले हैं SON, ध्यान देंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सब S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड N स्टैंड्स फॉर नो चेंज। हियर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। We are talking about personal pronoun. Okay, let's see rule number 1. Let's see examples first, then I'll tell you about the rule. Okay, you said to me I am doing my work. Okay,
Let's see. What does this rule say? The rule says that if inside reported speech there is first person pronouns. First person pronouns like I, me, my, mine, we, us, our, and ours. These pronouns will be changed according to the number, person, and gender of the subject of reporting verb. फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मतलब आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर एंड आर्स, आर सेल्फ, माई सेल्फ, ओके, आर सेल्फ्स। तो इनको हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसके नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। लेट्स सी, you told me that you were doing your work। ओके, आप देख सकते हैं अच्छे से। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। They said we shall give up farming। Okay, let's see. We, first person. They said that they would give up farming। Okay, let's see one more example. Sarita said I am learning my lesson। देखिए, सरिता said that I, first person according to Sarita, she was learning, my first person according to Sarita, her lesson। Okay, let's see another rule. Let me read it. Okay, students, let's study rule number 2, second person pronoun. Let's write first example. Hari said to me, you are not a good player। What is rule? Second rule, if inside reported speech there is second person pronoun. Second person pronoun means you, your, yours, yourself, yourselves। Okay, so second person pronouns will be changed according to the object of the reporting verb। Okay, let's see, let's change. Hari told me that you, according to me, I was not a good player। Students, we can see here you has been changed to I। यह यू को आई के अनुसार बदल दिया गया। सवाल ये उठता है मी के अनुसार चेंज हुआ तो आई कैसे? यहाँ मी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है
और यू क्या है, नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो मी का यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इसीलिए यहाँ आई है। ओके, आई थिंक यू विल बी क्लियर। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। शी said to him, you may go home. You may go home. Okay, let's see. She told him that he might go home. You can see him, you has been changed according to him, he. Okay, let's see exception related to rule number 2. What is exception? Let's, what happens sometimes there is use of second person in reported speech, but there is no object after reporting verb. So let's see how will change this type of sentences. Let's see examples. Exception. Exception. Okay. Malik said, you cannot swim. Okay, we see here in reported speech there is use of second person you, but after reporting verb there is no object. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नियम ये कहता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, बट यहाँ है नहीं। सो व्हाट विल वी डू, विल अज्यूम, हम लोग यहाँ मान लेंगे फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन मान लेंगे। देखिए, मलिक टोल्ड मी, अब हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे तो हमें इस पर समझ में आएगा कि यहाँ था नहीं। मी या अस दोनों में से फर्स्ट पर्सन में मी आएगा या अस आएगा, तो मी मान लिया तो क्या होगा, दैट आई कुड नॉट स्विम। ओके, आप देख सकते हैं बदल दिया गया, फर्स्ट पर्सन में बदल दिया गया। ओके, अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ ए.जे. टॉमसन एंड ए.वी. मार्टिनेट, a practical English grammar, we can change second person pronoun according to the third person of the object of reporting verb. We can assume third person object if there is no object after reporting verb while changing second person pronoun of reported speech. Let's see example from a practical English grammar book. Okay, they said, why did you not use break? Okay, let's see. You can see there is second person pronoun while the verb is past one, and after this verb there is no object. They asked asked him why he had not used break. Okay, let's see another example. The man said,
why sorry what have you got in your bag? The man asked her what she had got in her bag. Here we have, हमने जो है यहाँ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन माना है और उसके अनुसार इनको चेंज किया. ओके, लेट्स सी द रूल रिलेटेड टू द थर्ड पर्सन. लेट मी रफ इट. स्टूडेंट्स, जब रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा तब हम उसमें जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं करेंगे. लेट्स सी. दे सेड शी was doing her work. They said that she had been doing her work. You can see, यहाँ देख सकते हैं she बदलाव नहीं हुआ हर में, क्योंकि रूल ये कहता है थर्ड पर्सन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते. जितने भी नाउन्स होते हैं वो थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं. ओके. और यदि कभी किसी सेंटेंस, किसी डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन हो, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदल रहे होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को जब हम बदल रहे होंगे तो हम वहाँ जो है प्रोनाउन की बात जो है, प्रोनाउन की जगह पर जो है वहाँ ब्रैकेट में नाम लिख देंगे. देखिए, निखिल said to Hamid, I shall always help you. Okay. Nikhil told Hamid that he देखिए अब यहाँ आई को ही में बदला, ही निखिल के लिए, तो हम लिख देंगे निखिल, ये ब्रैकेट में, निखिल वुड ऑलवेज हेल्प हिम. यहाँ यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ हम हमीद लिख देंगे. ये ध्यान देंगे. ओके students, I think you will have clearly understood the concept of changing pronouns and exceptions. Thanks. Take care of yourself. Next video, next topic. Okay, thank you.